Hello students, let us start the topics that is definite integral. Before starting these topics, I just want to say that we have committed a mistake in the topics partial fractional method. Mistakenly I have written 1 by t minus 1, I have written like this. This is not true, this is wrong. This should be taken as 1 by t minus 1 by t, and for that the value of integration, this is x to the power n plus 1, should be 1 by n. I have not also taken this 1 by n here, and the formula for that one is 1 by n log x to the power n plus 1 plus c. So this is the correct answer, and similarly we can find the integration of the function, that is dx divided by x to the power n minus 1. This should be taken as 1 by n log x to the power n minus 1 to the power n plus c. I am very sorry that I have done such type of mistake there, so please correct it this one. So let us start the topics, that is definite integral. You should remember these two formulas, and just we will take one question from here. So what is the definite integral? The definite integral and indefinite integral. Indefinite integral means it produces simple a function, but a definite integral produce a number. Suppose we take here one example. Just you take example x cube dx. If you take the integration of this one, this should be taken as x to the power 4 by 4 plus c. So this is simple a function. But when you take this one as integration of 1 to 2 x cube dx, now this becomes a number. This is a pure number. So the definite integral, whatever we write here, integration of fx from a to b, this is called the definite integral, and the definite integral is a constant number, that is a pure integer or pure real number. So this is the indication of the definite integral. Let us see how we break this one. So if you write here a to b fx dx, then the formula for that function, this one, is your fx a to b. So this is the derivative of this function, or you may say this is the derivative of this function. So and this can be broken at as fb minus fa. This is also called as the Newton-Leibniz formula. Now let us take some examples here. Let us take one example, that is example number 1. Find the integration of 0 to 1 x cube plus x square plus x plus 1 dx. So first you just find out the integration of this function, that is x to the power 4 by 4, x cube by 3, x square by 2 plus x. You cannot write here the constant value because this is a definite integral. Now just you put the value of x as 1 first, and then you put the value of x as 0. So this is 1 by 4 plus 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1, then minus 0 plus 0 plus 0 plus 0. Because when you put the value of x 0, all the results will be 0.
Now just you find the value of this one. In this way, the definite integral is calculated. Now let us take some good examples from these topics. That is to find the integration of the function. Suppose example number 2. Find the integration of the function, that is what? 0 to 1 dx x square plus 2x plus 5. Suppose I want to find out the integration of this one. As you know that this is the question from some special integration, and this can be written as 0 to 1 dx x plus 1 whole square plus 4. Now the value in the indefinite integral of this integration is 1 by 2 tan inverse x plus 1 by 2 from 0 to 1. Now what you do? First you take the value of x as 1 and then you take the value of x as 0. So if you take the value of x as 1, this is 1 plus 1 by 2 minus tan inverse 0 plus 1. Or if I think if you write here minus, then this will be better, because we just find out the correct value. That is the minus 1. If you put here minus 1, it's minus 1 plus 1 by 2. So here this is 1. So this is 1 by 2. Tan inverse 1 is your pi by 4 and tan inverse 0 is 0. So the integral value of this question is your I is equal to what? That is pi by 8. So this is the answer for the question. In this way we find the values of definite integral. सबसे पहले तो ये देखना होगा कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है. One more thing I want to say here. This value is called lower limit and this value is called upper limit. यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं और यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं. सबसे पहले तो ये देखा जाए कि डेफिनेट इंटीग्रल है क्या. ये हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी मान लीजिए कोई ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन and this is the boundary line from A to B. Now you want to find the area of this bounded thing which is bounded by this function and the x-axis. If the graph is of the function y is equal to fx and you want to find the area, then this area is your A to B fx dx. This is the main concept to study the definite integral. We will also study to find the bounded area of the functions, some different functions, and this is purely comes from first principle of integration, that is also known as the summation of the integration, summation part of the integration. इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन चीज है, इसका जो मेन कंसेप्ट है, दैट इज दिस वन. ए को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट और इस बी को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट. इसको आप जान कर रखिए कि डेफिनेट इंटीग्रल का मेन कंसेप्ट है क्या. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 0 to pi by 4 sin x plus cos x. इसको आप ऐसे नहीं लिख के आप लीजिए, लिखिए √1 plus sin 2x dx. प्यारे बच्चों,
जैसे कि आप जानते हैं कोई भी फंक्शन जो इसके इस फॉर्म में होती है, जैसे दिस इज अ फंक्शन, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर, दिस इज सिंपली ए mod x, and mod x is pure positive number या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक कीजिएगा, then this will becomes as root over this one is your sin square x plus cos square x plus this is your 2 sin x cos x dx. Now you see that this is your sin x plus cos x whole square dx. जैसे कि हम लोग ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम लोग mod x कहते हैं. तो यहाँ पर रूट के अंदर आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है. तो नेचुरली जब इसको आप ब्रेक करोगे तो होगा 0 to पाई बाई 4, दिस इज व्हाट mod sin x प्लस cos x dx. तो जब ये मॉड में कैरी ऑन हो जाता है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इस रेंज में, जो कि x का यहाँ रेंज दिया हुआ है 0 to पाई बाई 4. Now if you see, this is the graph of y is equal to sin x, this is 0 to pi, and this is the graph of 0 to pi by 2, this is the graph of cos x, this is y is equal to cos x. So naturally if you take the value of x from 0 to pi by 4, here that is, since x belongs to what, 0 to pi by 4, this is the range, 0 is the lower limit and pi by 4 is the upper limit. So here in this range the value of sin x plus cos x is, this is purely positive, ये positive होगा. This means what, in this range mod of sin x and cos x is positive, so this can be written as your sin x plus cos x. तो कहने का मतलब है यहाँ जो mod का वैल्यू आ रहा है, mod के अंदर sin x plus cos x है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं sin x plus cos x में. So the integral value is, therefore the integral value of 0 to pi by 4, इसको आप लिख सकते हैं sin x plus cos x dx. So this is sin x का जो इंटीग्रेशन है, that is minus cos x, and the integration of cos x is your plus sin x. This is from 0 to pi by 4. Now you just put the value of x as pi by 4 and as 0. So this is minus cos pi by 4 plus sin pi by 4 minus cos 0 plus sin 0. So this is minus 1 by root 2 plus 1 by root 2, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर काट दिया था क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 by root 2 होगा. Now this is minus minus plus, cos 0 is 1 plus 0, so the integral value is 0. देखिए हर केस में डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो प्योर एक नंबर होगा. चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर चला जाए, 4 की ओर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4. तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लेना चाहेंगे एक ऐसा फंक्शन जिसका स्वरूप हम लोग पहले देख चुके हैं, दैट इज टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन दैट इज फ्रॉम, मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं 1 to 2 dx x to the power 5 plus 1. इसके पहले हमने इसका फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं. आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते हैं क्योंकि वी नो दैट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ dx x to the power n plus 1,
this is your 1 by n log x to the power n, x to the power n plus 1 plus c. This is the integral value of this function. So here you see just the value of x is, the value of n is 5. So इसका value हम लिख सकते हैं 1 by 5 log x to the power 5, x to the power 5 plus 1 from what? 1 to 2. You can write directly, कोई दिक्कत नहीं है. और अगर आपको ये फॉर्मूला के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जानते हैं कि हम ले लेते हैं t के जगह x to the power n plus 1 और फिर इसको हम लोग ले लेते हैं कितना dt by dx, that is your n x to the power n, then dx is your dt by n x to the power n minus 1. जैसे कि इसके पहले एपिसोड में मैंने इसके बारे में डिस्कशन कर चुका था और वहाँ एक मिस्टेक भी था, उस मिस्टेक को मैंने यहाँ ठीक किया है. सो यू कैन राइट डायरेक्टली. और ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये फॉर्मूला है. और अगर यहाँ पर x और x टू द पावर n माइनस 1 अगर है तो ये हो जाएगा 1 by n log इसके जगह x टू द पावर n माइनस 1. ये दो फॉर्मूला आप याद रखिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग बैठाएंगे योर लॉग x के जगह 2 बैठाया जाए और 2 to the power 5 plus 1. इसके बाद माइनस करके 1 यहाँ पर 1 है तो फिर log 1 to the power 5, 1 to the power 5 plus 1 और इस तरह से इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए. दैट इज 1 by 5 log दिस इज 32 divided by 32 plus 1 that is 33 minus log 1 by 2. So this is the answer for the function. So dear students, इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू को निकालते हैं और अगला एपिसोड में कुछ और क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तब तक के लिए धन्यवाद.